everyone, and welcome to this long awaited video wherein I will be discussing XAT 25 score versus percentile. Now, by the time this video releases, I hope that XAT does not come out with the official result. नहीं होगा. I think they will release the official keys first, then an objection window शायद होगा, and after that the result will come out. But in this video, I will talk about my prediction in terms of what the score versus percentile grade might look like this year. Of course, there is no certainty, and that is a very tricky test to judge. तो I can't really guarantee कि नहीं यही स्कोर पे यही परसेंटाइल आएगा, but a lot of people had been asking me for the last couple of days, so I thought that एक वीडियो बना देते हैं so that all of you are थोड़ा सा mentally at peace when it comes to your ZAT score versus percentile. So let's start with this particular video. Let's see what we have in store. So पहले तो I'll give you an overview of the ZAT 2025. What I would suggest is एक बार ZAT 25 का एनालिसिस का जो वीडियो था ना वो देख लेना. It will be one of the recent videos that I have made. तो उसके अंदर you will be able to see what were my raw thoughts. तो जैसे ही बाहर निकला था टेस्ट सेंटर से, what exactly were my thoughts about the test. I generally believe in sharing my opinion as quickly as is possible because जो fresh होता है ना वो एकदम अच्छे से आ जाता है. Now if I think about that, again the mind gets conditioned looking at other people's responses and looking at some data. यहाँ वहां से थोड़ा सा वो condition हो जाता है, and that's not really a good place जहाँ से I will want to share my analysis. तो वो वीडियो एक बार चेक कर लेना if you have not looked at it. उसके अंदर I have discussed in fair detail what I thought of the test, कहाँ पे मतलब मुझे लगा कि easy था, moderate था, difficult था. So do have a look at that part. Now, to give you a basic overview, there were four sections that were there, including the GK section. So, the first section was verbal and logical ability, and I will say that in one word, this section was difficult. क्यों difficult था? Because इसके अंदर जो reading comprehension वाला part था ना, वो properly tough था. So, when I say tough, why am I saying that it was tough? Purely because the passages were difficult to read, the questions were difficult, सारे inferential questions थे, and उसके बाद जो options थे, those were super close. मतलब एक दिन ए आंसर हो सकता है और कोई और दिन बी भी आंसर हो सकता है. सो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस दैट वेर प्रेजेंट. अगर ऑप्शंस के स्टेम्स ढूंढेंगे और पैसेज में जाएंगे तो भी आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट था. एंड देयर वेर व्हाट 5 पैसेजेस दैट वर देयर वाज अ पोएम दैट वाज देयर. तो ओवरऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू द मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन दैट वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड. तो ये काफी डिफिकल्ट हो गया था यहाँ पे. ठीक है. सो वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी आई विल से वाज प्रॉपरली डिफिकल्ट. इट वाज अ टफ सेक्शन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज द वन दैट मेड इट टफ. In terms of verbal ability, I thought that it was on the moderate side. Two question types I would want to discuss here. One is grammar. अगर prepare किया होगा ZAT के लिए, you knew that whatever we use in day to day conversation वो एक एग्जैक्टली अच्छा चीज नहीं होता या ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं होता मोस्टली. इफ यू हैड नोन दिस सिंपल फैक्ट एंड यू न्यू द बेसिक एरर्स दैट वर देयर, यू शुड हैव बीन एबल टू हैंडल द वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट. तो वो ग्रामर वाला पार्ट वहां पे हैंडल हो जाता. The second thing that I'm talking about is in terms of jumbled paragraphs. तो jumbled paragraph के अंदर भी typically see that difficult test होता है, and that is purely because the paragraph is not exactly a jumbled paragraph. The question is basically, how do I put it? The question is essentially a sequential arrangement of sentences wala question. It's not a jumbled paragraph question. And that is why it starts from the middle of the paragraph. तो बीच में शुरू होता है. So जो भी अपना paragraph starter, conclusion, ये वो जो फंडे होते हैं वो सारे यहाँ पे applicable नहीं होते. That's why I would say that jumbled paragraphs or jumbled sentences is a difficult question type. But इस साल that के अंदर I thought that the जम्बल्ड सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन टाइप्स वेर ऑन दी मैनेजेबल साइड. तो वर्बल एबिलिटी थोड़ा मॉडरेट था, इसको मैनेज कर सकते थे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज प्रॉपर्ली डिफिकल्ट. In terms of decision making, I would say that it was typical ZAT. Moderate to difficult is what I would say. A couple of sets were easily manageable. दो तीन सेट्स थे जो मॉडरेट थे, दो सेट्स थे जो प्रॉपरली डिफिकल्ट मुझे लगे. You let me know what you think about those 7 sets that were there, 21 questions that were there in the comment section below. I'll try to share my opinions as well. And if you want my opinion on each set, I will put a pinned comment in the comment section below. So do let me know what do you think about the decision making wala part. But it was like normal ZAT. जैसे होता है वैसे ही था. One thing that I thought was the sets were slightly longer, the options were longer. So that was what happened in decision making. What did not happen was we didn't get those, or we did not get a lot of those arranged
अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कि 5 4 3 2 1 को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इन टर्म्स ऑफ द प्रायोरिटी अरेंज करो, in terms of the most recent course of action to the farthest course of action, या immediate course of action to farthest course of action, वैसे रैंक करो, वो क्वेश्चंस नहीं थे. That is what made it slightly manageable, but otherwise the section was difficult. QADI, I would say again it was normal ZAT. ऐसा कुछ क्वेश्चन टाइप नहीं था जहां पे यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अ फॉर्मूला दैट यू हैड नो आइडिया अबाउट. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के अंदर वट एवर यू वुड हैव स्टडीड यू वुड हैव बीन एबल टू मैनेज. इवन द फ्रस्टम वाला क्वेश्चन, अगर फ्रस्टम का सरफेस एरिया नहीं पता था तो भी इट वॉज फाइन. यू कुड हैव इजीली यूज्ड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कोन माइनस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन, यूज्ड योर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर व्हिच आई थिंक वाज अ बिग हेल्प दिस ईयर, एंड यू वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो बहुत डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगा था, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये सेक्शन भी बहुत मेहनत करवाने वाला सेक्शन था. राइट, यू हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टेप्स, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना था, उसके बाद ही यू वुड हैव बीन एबल टू अराइव एट द आंसर. द गुड थिंग वाज द ऑप्शंस वेर फार अपार्ट, तो अगर आंसर मिल जाता और बॉल पार्क में होता यू कुड हैव इजीली मार्क्ड द करेक्ट ऑप्शन. In terms of GK was as usual. Again, it was a mix of static and current affairs. तो दोनों चीजें थी इसके अंदर. जो दो तीन मैच द फॉलोइंग, तीन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे, you should have been able to manage them easily अगर एक दो चीजें भी पता होती तो. Otherwise, also I don't think it was very difficult. मतलब even a casual reader can expect to score around 8 to 10 marks in this particular section. So I don't think that should have been challenging as such. That is basically GK. ओवरऑल अगर कोई पूछेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज माय ओपिनियन अबाउट द टेस्ट, आई विल से दैट इन वन वर्ड द टेस्ट वाज लेंथी. The reading comprehension part was difficult, not because the passages were very long, but you required a rereading and rereading of the passages, right? So हर एक passage मुझे तो एटलीस्ट 2 से 3 बार properly पढ़ना पड़ा to understand what the question is trying to ask me. Even after that, I don't think I was very confident about some of my answers, but I would say that भले ही वो 500 वर्ड्स का पैसेज होगा, बट देन व्हाट हैपेंड वाज यू हैड टू रीड इट थ्राइस, व्हिच बेसिकली मेड इट अ 1500 वर्ड का पैसेज, व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. And more importantly, अगर देखेंगे the 75 questions that were there as a part of this test, so 26 plus 21 plus 28, 75 questions that were a part of this test. 170 minutes ना बहुत लोगों को कम पड़े होंगे, so people would not have been able to go through or attempt 75 questions in these 170 minutes. That will tell you how lengthy the test was. तो काफी lengthy test था. There are no two ways about it, मतलब कोई दूसरा opinion नहीं है. Definitely the test was on the lengthier side. Overall, I think it was pretty similar or slightly more difficult compared to XAT 2024. And to give you some context, XAT 2024 was possibly the most difficult XAT over the last 5 years. So वहां पे अगर देखेंगे तो XAT 24 was properly difficult, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा difficult या flat I thought was XAT 2025. तो इससे क्या impact होगा? Score versus percentile I think are going to, the scores corresponding to a particular percentile I think will fall by a bit, या फिर they will stay flat. That is what I think is going to happen in this particular year. I'll share the grid on this slide. So this is what I think about this XAT 25 score versus percentile. I think that 99 percentile will be at 33.25 marks. Last year 33.5 के आसपास था, तो I have just scaled it down by a bit. Sectionals again थोड़ा सा scale down किया हुआ है. I think the impact is going to be slightly higher at higher percentiles compared to lower percentiles, purely because if you look at the number of easy questions, that remained more or less same compared to XAT 2024. But जो difficult questions थे ना वो थोड़े से बढ़ गए. So higher levels पे जो fight होगा ना वो थोड़ा ज्यादा intense होगा is what I think compared to last year, and that is why higher levels पे you will see a higher deviation compared to lower levels पे the deviation that we have here. But overall I think it was very flat. It was very similar to what happened last year. This is what my score versus percentile grid will look like. Now, in terms of the cutoffs that we have, अगले slide पे I am sharing the XAT, BM and HRM cutoffs from last year. I have shared it earlier as well. मैं फिर से share करूंगा उसको. So do have a look at this grid. Do have a look at that percentile grid. दोनों को match करके देख लेना. Where is it that you like? In case you want to predict कि मुझे call आएगा या नहीं आएगा. So this is what the XLRI cutoffs looked like in 2024. XLRI generally divides candidates into 4 categories. So male engineers, male non-engineers and female non-engineers. And if you look at the overall percentile 96, 91, 95, 90, sectional भी अलग-अलग होते हैं for each of these categories. HR के अंदर भी अलग-अलग होते हैं for each of these categories. That is what it looks like in this particular context. ठीक है?
सो ऐसे कुछ दिखाई देता है। सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर करना इज मैंडेटरी। ये जो सेक्शनल कट ऑफ्स होते हैं ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, मतलब आई एम नॉट सेइंग द सेम सेक्शनल कट ऑफ्स विल हैपन दिस ईयर एज वेल। डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल मैनेज टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ्स, कितने लोगों को उनको कॉल देना है, ये सब पे डिपेंड करता है सेक्शनल कट ऑफ। तो ऐसा नहीं है कि दे डिसाइड प्रीवियसली कि नहीं 80 परसेंटाइल पे ही कट ऑफ रखेंगे, ऐसा नहीं होता। दे विल ट्राई टू सी विच कॉम्बिनेशन गिव्स देम द बेस्ट मिक्स ऑफ कैंडिडेट्स एंड उसके हिसाब से सेक्शनल कट ऑफ्स अलाइन होंगे। सो दैट्स व्हाई यू हैव सेक्शनल कट ऑफ्स हियर। The non-XLRI colleges के cutoffs are also there on this particular slide. Now there are two things that you have to understand. One, a lot of colleges do not really accept only XAT. वो CAT के हिसाब से भी कॉल दे सकते हैं, कोई कोई कॉलेजेस CMAT से भी कॉल देते हैं. So there are quite a few colleges that will accept other non-XAT tests as well. Some colleges also have प्रोफाइल बेस्ड क्राइटेरिया। तो कहीं कहीं पे वो लोग मतलब दे वांट टू इनवाइट अ लॉट ऑफ पीपल बेसिकली, एंड दैट्स व्हाई व्हाट दे विल डू इज दे विल लुक एट अ प्रोफाइल एज वेल। अगर प्रोफाइल डिसेंट है, स्कोर थोड़ा कम है, तो भी कॉल दे देंगे, ऐसे होता है। दैट्स व्हाई दीज परसेंटाइल्स आर इंडिकेटिव। ऐसा नहीं है कि अ टैपी विल नॉट कॉल यू इफ यू हैव 84.9 परसेंटाइल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीज आर इंडिकेटिव परसेंटाइल्स दैट यू हैव हियर बेस्ड ऑन लास्ट ईयर का डेटा, सम रिसर्च, नॉर्मली क्या परसेंटाइल होता है उसके ऊपर से ये बेस्ड है। So do have a look at this in case you are planning to apply or you have applied to some of these colleges that we have here. Okay. The other thing is a lot of data is not available when it comes to these colleges. So that's why you will these are the indicative numbers that are there. तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे 2% ऊपर नीचे करके इसको सोच लेना. That is what the cutoff will look like. Now, what to do next? So that has done one good thing and one not so good thing. एक अच्छा चीज ये किया that they gave the response sheet within 2 days of the test. So that is something that is sort of unheard of in the Indian MBA test space, so to say. But किया तो है, अच्छा अच्छी बात है that they have done that. The only good thing that could have happened is they would have given the official key as well, because अभी बहुत ज्यादा speculation हो रहा है. Having said that, a lot of people have asked me this question: what should I do about the calculator? One, should I check the calculator? And two, what about the percentile predictors? Now, kudos to CrackU for having coming out with the key on such a short notice, and I think it's fairly accurate. मतलब I wouldn't say कि पूरा ही गलत है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. They have done a commendable job. I think it is something that you can definitely trust, right? Having said that, I don't really trust this that much, because what happens is काफी जगह पे ना काफी ambiguity है questions के अंदर, and it can go either way. I'm not saying that one person is right and the other person is wrong, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. VARC and DM के अंदर, या verbal and logical ability and DM के अंदर, there are quite a few questions जहाँ पे it can go either way. मतलब A भी आंसर हो सकता है, B भी आंसर हो सकता है. It depends on what the paper setter's mood is. There are some questions. I'm not saying that पूरा का पूरा verbal section ही unprepared, ऐसा नहीं है, but maybe 3, 4, 5 questions is where I think there will be some contention between CrackU's key and the official XAT की. अगर नहीं होता तो I'll be very happy, but अगर होता भी है तो वो I think 3, 4, 5 क्वेश्चन में हो सकता है. Now the problem with these 3, 4, 5 questions is people who are on extremes, जिनका 35 के ऊपर प्रेडिक्शन है या 40 के आसपास प्रेडिक्शन है, दे नीड नॉट वरी. 4-5 मार्क नीचे भी आएगा, यू विल स्टिल गेट दैट 99 परसेंटाइल, यू विल स्टिल गेट अ कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीपल हु आर एट 15, 5 मार्क मिल भी जाएंगे तो भी आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट, तो वहां पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. बट पीपल हु आर बैंग इन द मिडल, एंड आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन दैट 25 to 32 वाला रेंज, उनके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है, इवन इफ देयर इज अ चेंज इन मे बी 2 or 3 क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेस. व्हाई? बिकॉज फॉर एवरी क्वेश्चन दैट यू मैनेज टू ओवरटर्न, मैंने इनकरेक्ट को करेक्ट कर दिया, सो अकॉर्डिंग टू द क्रैक्यू की, लेट्स से योर आंसर वाज इनकरेक्ट बट ज़ैट बोलता है कि राइट है, यू आर गेनिंग 1.25 मार्क्स, माइनस 0.25 बच गया एंड 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल गया. ऐसे अगर मैं 3 या 4 क्वेश्चन में कर दूं, आई एम लुकिंग एट अ रेंज ऑफ प्लस और माइनस 5 मार्क्स, एंड दैट्स अ ह्यूज रेंज व्हेन इट कम्स टू द XAT. पीछे जाके अगर फिर से देख लोगे स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ग्रेड, यू विल ऑब्जर्व दैट 5 मार्क्स इज अ बिग डील व्हेन इट कम्स टू द XAT. दैट इज व्हाई व्हाट आई वुड सजेस्ट इज देख लो. काफी लोगों को काफी फोमो होता है, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, क्या करना चाहिए यार, इंस्टेड ऑफ डाइंग वंडरिंग कि क्या हो सकता था, क्या है, कौन है, एंड इट बॉदरिंग यू द एंटायर डे, गेट डन विद इट. एक बार देख लेना, खत्म कर देना चीज को, ठीक है. बट डोंट थिंक अबाउट इट अ लॉट मोर सीरियसली. इतना उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि उससे लाइफ एंड डेथ के डिसीजंस बना लो.
So don't make big decisions now. Don't feel frustrated because the percentile predictor is showing you 80 percentile. Don't feel ecstatic because the percentile predictor is showing you 99.5 or 99.9 percentile. बड़ा डिसीजन अभी नहीं लेना है at this point in time. Stay calm, let the official key come out, let the objection window get done with. एक रिजल्ट आ जाएगा थर्ड या फोर्थ वीक के आसपास, जनरली जैट का रिजल्ट आ जाता है. सो वेट फॉर दैट रिजल्ट टू हैपन. Meanwhile, continue whatever you were doing. So there are two situations that are there. One, या तो you would have been focusing on other tests. So जिसका MyCat है, जिनका CMAT है, जो लोग CET के लिए prepare कर रहे हैं. Now is the time to focus on your remaining tests as well. Just because you are being shown a good score, a good percentile, does not mean that you take the tests lightly. बिल्कुल skip नहीं करना है. You have to ensure that you get as many calls as is possible from the colleges that you applied to, and you convert as many of them as is possible. भले ही एडमिशन नहीं लेना होगा चलेगा, don't take admission, it's fine, but go for the interviews. Make sure that you are cracking each and every call that you get, because that gives you a different level of confidence. So even once you get into the B school ना, बहुत confidence आएगा if you convert your calls. So make sure that you do that. So test prep को अभी भी lightly नहीं लेना है. There is still some time to go in the season. Make sure that you are attempting these tests with utmost preparation. ये करना है. On the other hand, if you have interviews lined up or if you are expecting calls, make sure कि तुम्हारा interview preparation start हो गया होगा. I'll be putting up some videos on this channel as well. And having said that, CET का भी एक course है जो I have launched recently. The sessions are going to start from the 20th. So if you are interested, do check out that course as well. I'll put the link to that video, the course launch video, in the description box below. तो उसको देख लेना एक बार. ठीक है. Interview preparation is something that you need to do. Again, as I mentioned, I will be putting up some videos that will help you with your interview prep. But go for mock interviews. Make sure that you are studying what has happened over the last 6, 8, 10, 12 months, and be very well prepared for the interview. अभी कॉलेज को सिलेक्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते. डोंट आस्क दैट क्वेश्चन, शुड आई get into this college, should I go for this interview? You have to go for the interview. मेरा डिफॉल्ट आंसर है इंटरव्यू के लिए जाओ, क्रैक करो, गेट दैट कन्वर्ट, देन डिसाइड ना उसको लेना है कि नहीं लेना है. नाउ इज नॉट द टाइम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनीथिंग. यू डोंट हैव एनीथिंग टू रिजेक्ट. कुछ है ही नहीं हाथ में तो क्या रिजेक्ट करेंगे, राइट? सो इंटरव्यू प्रेप पे फोकस करना एट दिस पॉइंट इन टाइम. मेक श्योर दैट यू क्रैक योर इंटरव्यूज एंड देन यू डिसाइड कि क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर, right? So that was basically what I had from my side in this particular video. I hope this was useful to you. If you have any doubts, any queries, something that you think is different from what I thought, do let me know in the comment section below. You think that these percentiles are not making any sense, do let me know in the comment section below. I'll try to sort of understand where you are coming from. Maybe I'll build it into my system as well, and जब final result आएगा तो everybody will know, right? But do let me know what your thoughts are on this video. Do check out the CET course as I mentioned. It will start on the 20th, but you can enroll for it right now, so that in case there is an overflow of participants, then I will be shutting down admissions, right? तो वैसे करेंगे. And interview के लिए भी stay tuned on this channel, and yeah, keep preparing. The journey is not over yet. अभी बहुत time बाकी है season के अंदर. Lot of calls, lot of converts to be done, some tests are there, तो सब पे focus करना. Do well, and stay tuned for the next video on this channel, and I will see you then.